Good evening, everyone. Is my audio and video clear? I hope all of you doing well. Good evening to all of you who's watching this video. I am Manat Sharma from Oliveboard, and I'm here with this very important session. ये जो आपका सिडबी का एग्जामिनेशन आ रहा है पास, आई होप यू नो फिल द फॉर्म्स एंड ऑल, आप सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी. एंड वी ऑल्सो नो कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको करना बहुत 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 जरूरी रहता है, राइट? पीवाईक्यूज को समझना कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं ताकि हम अपनी तैयारी को भी उसी एंगल से अलाइन करें. इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तब जिन लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है, आज हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में जितने पीवाईक्यूज हैं सिडबी से रिलेटेड हम सब निपटाएंगे. Even if I have to extend the class by 15-20 minutes or half an hour, I will try and complete all the MCQs ताकि आपको एक ही वीडियो में सब जो PYQs हैं एक ही जगह पे मिल जाए. ठीक है? So before I begin, if you want to download this YouTube class PDF, you can do it from the Oliveboard app. App पे जाएं, वहाँ पे there's going to be a separate section of YouTube class. There's going to be a separate courses section. Courses में एक YouTube class PDFs का होगा, वहाँ से आप PDF को download कर सकते हैं. One request to all of you, I want you to give me quick answers in this classification, in this class. I want you to give me quick answers. फटाफट से आप बस नंबर जरूर डाल दीजिएगा कि फर्स्ट का ए है, बी है, सी है, जो भी आप डालना चाहें नंबर जरूर डाल दीजिएगा. एंड क्विकली आंसर करेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे अराउंड 80 क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो वो हम फटाफट से तभी कर पाएंगे अगर आप रोबस्टली आंसर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट टू टेक अप कोचिंग, तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स है फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. तो जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्लस वीडियो लेक्चर्स, डिटेल्ड स्टडी नोट्स, करंट अफेयर्स कैप्सूल्स एंड मैगजीन्स, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल रहेगा. यू कैन एनरोल इन दिस एग्जामिनेशन इन दिस कोर्स इफ यू वांट. ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, अंडर द MSME Development Act, when did the act officially come into force? तो आपको जो MSME Act है, MSME Development Act है, वो कब आया था? It came into force when 1st January 2005, 2nd October 2006, 1st April 2007, 31st March 2006 या फिर 15th August 2006. Good evening, KS Parmeshwara. I hope you're doing well. What is the answer? Parmeshwara has given me the answer. I want others also to give me quick answers, all of you. ठीक है, Preeti has given me the answer. Parmeshwara has given me the answer as B, and that is absolutely correct. 2nd October 2006 को जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट है वो एनफोर्स हुआ था, इफेक्टिव 2nd October 2006 से हुआ था. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. As per the MSMED Act, appointed day is defined as the day following immediately after how many days from the day of acceptance or deemed acceptance of goods and services. 7 days, 30 days, 10 days, 15 days or 45 days. What is the answer? Appointed day का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको हम कैसे define करते हैं? It is defined as the day following immediately after how many days? कितने दिनों के बाद? Immediately. Parmeshwar has given me D as the answer. What about others? Anyone else would like to give me the answer? What about you, Preeti? D is absolutely the correct answer. 15 days is the correct answer. So, appointed day refers to the day after 15 days from when goods and services are accepted or deemed accepted. This is crucial in determining when delayed payment interest begins to accrue. है ना, कब से डिलेड पेमेंट जो इंटरेस्ट है वो कब से शुरू होगा, thereby offering MSMEs legal protection from long payment cycles. ठीक है जी, चलो. To
qualify as a medium enterprise, the turnover should not exceed 50 crore, 100 crore, 250 crore, 500 crore, 75 crore. ये हम जो डेफिनेशन देखते हैं MSME की, इस साल ही डेफिनेशन को हमने चेंज किया था, अपडेट किया था. तो टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड, हम इसमें मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है. तो जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनका जो टर्नओवर है, it should not exceed how much? Who's going to give me the answer? Third question, what is the answer? Absolutely correct, 500 crore. तो हम मैंने ऐसे ही सिखाया आपको 2.5, 25 टू 50 है ना, और आपका हो जाएगा 50, 100 एंड 500, राइट. तो यही आपका रहेगा. तो फॉलोइंग द 2025 रिवीजन, मीडियम एंटरप्राइज इज डिफाइंड बाय इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 125 करोड़, है ना, सॉरी 125 है ना, नॉट एक्सीडिंग 125 crore एंड टर्नओवर कैप्ड एट 500 crore, है ना. ये 125, 500 आपका रहेगा. सो डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, चलो. An enterprise with an investment of up to 2.5 crore in plant and machinery and turnover up to 10 crore. क्या है इसका आंसर? Turnover up to 10 crore. तो आपका 2.5, 25 एंड हमने 125 देखा था, और दूसरा हमने देखा था आपका 10, 100 एंड 500 करोड़. ये है आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये है आपके टर्नओवर लिमिट, है ना, यही हमने देखा था. तो आपका यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा एंटरप्राइज ऐसा है जिसकी 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर अप टू 10 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, माइक्रो एंटरप्राइज. दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. Acha, before I continue, all those who are new here, if you want to connect with me on Telegram, तो मन्नत एजुकेटर मेरा टेलीग्राम हैंडल है. आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. वहां पे भी आई कीप शेयरिंग सम MCQs एंड ऑल, तो वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है. ठीक है, एंड ऐसी क्लासेस के लिए आई विल कीप अपडेटिंग यू ओवर देयर. So what is the maximum investment limit in plant and machinery for a small enterprise? Again, small की बात कर रहे हैं, not micro. We are talking about small enterprises का investment limit in plant and machinery. अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में किया है. 5 crore, 25, 50, 1 और 10 crore. 25 crore is absolutely the correct answer. Again, 2.5, 25 and 125 ये हो गया investment, and 10, 100 and 500 हो गया आपका turnover limit. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है, सो यही हमने किया. माइक्रो में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़. अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज है तो 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ टर्नओवर. एंड अगर कोई मीडियम एंटरप्राइज है तो 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 500 करोड़ टर्नओवर. वी ऑलरेडी डन दिस in multiple questions. ठीक है, as per MSMED Act, the maximum agreed payment period between buyer and MSME should not exceed. बायर और एमएसएमई के बीच में जो पेमेंट पीरियड है, इट शुड नॉट एक्सीड 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज. व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी आप आंसर दें उसके सामने आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें. ठीक है, सो द आंसर इज 45 डेज. एब्सोल्युटली करेक्ट. जिसने भी आंसर दिया है 45 डेज इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. तो 45 डेज का है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यही मैक्सिमम अग्रीड पीरियड है. The MSc Facilitation Council must comprise a minimum of how many members and a maximum of how many members. तो जो आपकी MSc Facilitation Council है उसमें मिनिमम कितने चाहिए हैं, मैक्सिमम कितने चाहिए हैं? 2, 4, 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 4, 6. What is the answer? Seventh question. Alona Roth has given me the answer 3, 5. बाकी सब भी बताएं क्या आंसर रहेगा इसका. B is absolutely the correct answer. 3, 5. 3 minimum, 5 maximum. ठीक है जी. Disputes referred to MSc Facilitation Council should be resolved
within how many days, कितने दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए है? 60 days, 45 days, 30 days, 90 days और 120 days? कितना days? 8th question, what is the answer? Quickly, I want everyone to give me quick answers. 8th question है ये. 8th का Preeti is saying C, Parmeshwara is saying D, Ilona is saying 30. So the answer is D. It is 90 days and not 30 days. ठीक है? The act requires that disputes be resolved within 90 days to expedite justice for MSMEs without long court processes. तो कितना है? 90 days है. ये आपने याद रखना है जिसने भी ये गलत किया है. ठीक है जी. What percentage of the awarded amount must the appellant deposit while challenging the decision of the MSE Facilitation Council? कितना डिपॉजिट करना है अगर आपने अपील करना है? एपिलेट मतलब अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसे आगे अपील कर सकते हैं. तो एपिलेट डिपॉजिट एपिलेंट जो डिपॉजिट है वो कितना रहेगा? हाउ मच? 25%, 50%, 75%, 100% और नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड. 9th question का आपका आंसर क्या रहेगा? Who's going to answer? Parmeshwara has given me C. Alona is saying 75. Preeti is saying C. 75% is absolutely correct. So ये जो आपका section 19 है of the MSED Act, it mandates that any appellant, typically the buyer, must deposit 75% of the award amount in court when appealing against the Facilitation Council's decision. And this condition acts as a deterrent against non-serious appeals and helps ensure timely compensation to the MSMEs. ठीक है? If a buyer delays the payment to an MSME, what interest rate is applicable under the MSMED Act? If a buyer delays the payment to an MSME, कितना interest rate लगेगा? 1.5 times the bank rate, simple bank rate, 3 times the bank rate, RBI repo rate और SBI MCLR. 10th question का आंसर क्या है? C, you guys are seeing C as the answer. That is absolutely correct. 3 times the bank rate is the correct answer. Yes, section 16 जो है MSME Act का, उसमें delayed payments attract compound interest with monthly rests at a rate 3 times the bank rate announced by the RBI. The strict provision supports timely payments and liquidity for the MSMEs. है ना? ठीक है जी. Which platform was launched by the government of India to track delayed payments to MSMEs? Delayed payments के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है? उद्योग आधार पोर्टल, जेम पोर्टल, एमएसएमई समाधान पोर्टल, चैंपियन पोर्टल और सिडबी मित्र. कल ही अगर किसी ने मेरे साथ पेड बैचेस में सिडबी की क्लास लगाई है तो उसमें हमने फर्स्ट क्लास में ही हमने ये डिस्कस किया था, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? 11th question. MSME Samadhan is absolutely the correct answer. Ministry of MSME introduced MSME Samadhan portal to let micro and small businesses register complaints about delayed payments and monitor case status with MSE Facilitation Councils, promoting transparency and timely redressal. ठीक है जी. 12th question on board for you. How often is the board constituted under section 3 of the MSED Act required to meet? कितनी बार उनको मिलना चाहिए? Once a month, once every 6 months, once in every 3 months, twice a year, as and when required. 12th question, what is the answer? 12th question, what is the answer? Once in every 3 months is absolutely the correct answer. तो 3 महीने में एक बार मिलना जरूरी है. ठीक है? Which form is filled by companies every 6 months to report unpaid dues to MSME? कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है अगर जो आपके unpaid dues है वो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है आपको रिपोर्ट करने के लिए? Form MSME 1, Form MGT 7, AOC 4, GSTR 1 or 226 AS. What is the answer? Absolutely correct, guys. Form MSME 1 है.
A is absolutely the correct answer. Your Ministry of Corporate Affairs requires companies to file Form MSME 1 twice a year to disclose overdue payments to MSMEs exceeding 45 days. ठीक है? This enhances accountability and enforces timely payments under MSMED Act. Which of the following is not one of the banking targets set by the Prime Minister's Task Force on MSMEs? कौन सा नहीं है? 20% year-on-year growth in credits to MSEs, 10% annual growth in micro enterprise accounts, 60% of MSE credit to go to micro enterprises, 15% growth in MSE exports. All of the above are targets. What is the answer? 14th question, what is the answer? D is absolutely the correct answer. 15% growth in MSE exports. All नहीं आएगा इसमें लोना. The answer is 15% growth in MSE exports. इसमें not पूछा था, कौन सा नहीं है? So while export promotion is valuable, the task force focused on domestic lending targets. Task force ने domestic lending targets की बात करी थी. 20% growth in credit, 10% increase in accounts, 60% allocation of MSE credit to micro units. Export targets were not explicitly mandated. Alright. According to PM's task force recommendations, what portion of MSE lending should banks direct to micro enterprises? Kitna percentage? 25% annual growth in credit to MSEs, 10% annual growth in large enterprise accounts, 60% of total MSE lending, 15% growth in MSME exports, 5% rise in MSME sector jobs annually. 15th question, what is the answer? Preeti has given me C as the answer. What about others? Parmeshwara is saying B. Anyone else? C is the correct answer. 60% of total MSE lending. So banks are expected to allocate at least 60% of their total lending to the micro small enterprises toward micro enterprises as of the same quarter in the prior year to ensure that the smallest players in the MSME sector get adequate funding support. ठीक है जी? Okay, so Preeti, आपने C कहा था, that is absolutely correct. परमेश्वरा, C है correct answer, not B. ठीक है जी? Which among the following is not a scheme dedicated to MSME development? कौन सी MSME development से related नहीं है? PMEGP, मुद्रा योजना, स्फूर्ति, PM जनधन योजना, खादी विकास योजना. 16th question. Parmeshwara has given me D as the answer. Preeti says D. What about others? Alona. D is absolutely the correct answer. PMEGP भी MSME से रिलेटेड है, मुद्रा भी है, स्फूर्ति भी है, खादी विकास योजना भी है, जनधन योजना नहीं है. ठीक है. KVIC, Khadi and Village Industries Commission, is categorized as what type of institution? कौन से टाइप का इंस्टीट्यूशन है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव, रेगुलेटरी या फिर एडवाइजरी? किस टाइप का है ये? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिखा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब लिखा है. स्टैट्यूटरी क्या का मतलब क्या हुआ कि क्या एक्ट से पास हुआ है. एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हुआ है, किसी डीसी ने पास किया है या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू पास हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पास हुआ है. रेगुलेटरी का मतलब है क्या क्या वो रेगुलेट करता है किसी पूरे के पूरे बॉडी को, जैसे आपका पीएफआरडीए है, जैसे आपका आरबीआई है. एडवाइजरी क्या ये सिर्फ एडवाइस देता है? किस टाइप का है आंसर? 17th question. Parmeshwar has given me B as the answer. Anyone else would like to answer? Statutory is absolutely correct क्योंकि ये एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बना था. KVIC. It operates under MSME Ministry, plays a vital role in promoting khadi and rural industry development. ठीक है. What is one of the key goals of KVIC?
fiscal consolidation, social and economic objectives, lowering corporate taxes, encouraging FDI and MSMEs, universal banking access. की गोल क्या है KVIC का? 18th question, what is the answer? Absolutely correct. Social and economic objectives है इसका major goal. ठीक है. KVIC focuses on generating rural employment, self-reliance through the promotion of khadi and village industries. This fulfills both social upliftment and economic empowerment aims. ठीक है. B is correct answer. Absolutely correct. What is the operational duration of the SPICE scheme promoting circular economy in the MSMEs? क्या है operational duration SPICE scheme का? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years or 7 years? What is the answer? 19th question का क्या है? Operational duration क्या है SPICE scheme का? What is the answer? Preeti saying D, Prameshwara is saying A. इसका आंसर है C, not D, not A. The answer is 4 years. तो SPICE scheme क्या है? Scheme for Promotion and Investment in Circular Economy. It is a 4-year initiative designed to help MSMEs adopt circular economy practices such as recycling, reuse, sustainable portion. ठीक है? How many categories of interventions are incorporated under the Spurti scheme? How many categories? 2. Financial and technical. 3. Soft, hard and thematic. 4. Training, credit, marketing, export. 5. Planning, design, infrastructure, finance, monitoring. 1. Skill development. What is the answer? Absolutely correct. B is the correct answer. 3 has the answer soft, hard and thematic. Spurti supports traditional industries through soft interventions जैसे ट्रेनिंग दे दी उनको. हार्ड इंटरवेंशंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना. हार्ड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल जैसे दे दिया. थीमेटिक इंटरवेंशन जैसे क्लस्टर स्पेसिफिक सपोर्ट दे दिया. And this holistic approach fosters inclusive and sustainable cluster development. What is the interest rate charged under the Khadi Vikas Yojana? कितना interest rate charge होता है? 2%, 3%, 4%, 5% or 6%? What's the answer? What is the answer? कितना percent interest rate has been charged under the Khadi Vikas Yojana? Preeti saying E. Anyone else? The answer is not 6% but 4%. ठीक है? So under the Khadi Vikas Yojana, government provides financial assistance at a concessional interest rate of 4%. This helps Khadi institutions and artisans access affordable credit for working capital or infrastructure, promoting Khadi-based livelihoods. Right? How many sub-components are included in the MSME innovative scheme? How many sub-components? 2 schemes, 3 schemes, 4, 5 और 6 schemes. 22nd का क्या आंसर है? How many sub-components are included in MSME innovative scheme? Twenty-two answer A, but A is not the correct answer. 2 schemes नहीं है. ठीक है. परमेश्वरा gave me B as the answer, तो B ही है. 3 schemes है इसके अंदर. Incubation, intellectual property rights and design. 3 है इसके अंदर. ठीक है जी. According to RBI master directions, banks are not allowed to demand collateral security for loans up to what amount from micro small enterprises? 5 lakh, 7.5 lakh, 10 lakh,
15 lakh or 25 lakh? What is the answer? 23rd question, what is the answer? C is absolutely correct, 10 lakhs. So as per RBI guidelines, banks must not insist on collateral for loans up to 10 lakh extended to micro and small enterprises, enabling easier access for credit. Okay? Under the 2012 Public Procurement Policy, central public sector undertakings must procure a minimum of what percentage of their purchases from MSEs? 15%, 20, 25, 30 or 35? Yesterday only in the first class that I took up, ये हमने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में बात की थी इन द पेड बैचेस. तो अगर किसी ने लगाया है, आई थिंक प्रीति ने लगाया है, सो यू वुड नो व्हाट इज द आंसर, है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट, 25% इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सी हमने किया 25%. वेरी गुड. ठीक है, तो ये भी मैंने क्लास में करवाया था. तो यहाँ पे है, आप इसे पढ़ सकते हैं व्हेन यू डाउनलोड. ये 2018 का ऑर्डर है कि 25% जो प्रोक्योरमेंट है फ्रॉम एमएससी सेक्टर करना है. इसके अंदर हमने फर्दर सब कंपोनेंट्स भी देखा था कि आपको कुछ परसेंटेज एससी एसटी से करना है और कुछ 4% एससी एसटी से, 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से. ये भी है इसके अंदर. ठीक है, ओके. Under the scheme for promoting MSMEs in the northeastern region and Sikkim, what is the maximum government support for new industrial estates as percentage of project cost? 60%, 70, 80, 90 or 100%? What is the answer? 25th question. न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को कितना मैक्सिमम गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा? 60%, 70%, 80%, 90% or 100%? Anyone would like to answer? D is absolutely the correct answer. 90% है इसका answer. Allows 90% central financial support for establishing new industrial estates, encouraging industrial development in less industrialized states. So it's not 80, it is 90%. Okay. What is the cost of acquiring Z Gold certification under the MSME Champion Scheme? क्या cost है? 10,000, 25,000, 40,000, 75,000 or 90,000? What is the answer? 26th question. Rameshwara is saying A and A is not the correct answer. It is 90,000. So for Z certification, ये quality enhancement के लिए certification है for the MSMEs, and the gold level costs 90,000 and signifies adherence to top tier quality and sustainability standards. As per startup eligibility norms, when does a company cease to be considered a startup? 50 crore turnover, 7 years. 100 crore turnover, 10 years. 75 crore turnover, 8 years. 25 crores turnover, 5 years. 150 crore turnover, 12 years. What is the answer? 27th question. When does a company cease to be a startup? 27, you are saying D. Anybody else? B is absolutely the correct answer. 10 saal and your turnover becomes 100. So, if your turnover exceeds 100 crore and completes 10 years, या फिर completes 10 years, तो आप you don't come under a startup. ठीक है? When an MSME reclassifies into a higher category, for how long can it avail previous categories non-tax benefits? तो मान लो अगर MSME एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाए, तो कितने टाइम तक वो पुरानी कैटेगरी के जो नॉन टैक्स बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकता है? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 3 years, 5 years और 7 years?
28th question. Rameshwara is saying C, Preeti is also saying C, and that is absolutely the correct answer, up to 3 years. Fine. What is the minimum number of members needed to form a private limited company in India? अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो मिनिमम कितने चाहिए? 1, 2, 3, 5 या 7? Absolutely correct. 2. As per Companies Act 2013, a private limited company must have at least 2 members and a maximum of 200 members. Right? ठीक है. What is the required range of directors in a private limited company? What is the range of directors? The required range. 1 and 7, 2 and 10, 2 and 15, 2 and 20, or 1 and 15? What is the answer? What is the answer? 30 C कह रहे हैं आप. Anyone else would like to answer? Preeti? C is absolutely the correct answer, not B. 2 and 15 है. Private limited firms need at least 2 directors and may have up to 15 unless a special resolution is passed. ठीक है? According to the Companies Act 2013, how many individuals are needed to form a one-person company? Only one person, at least two persons, one individual and one nominee, only corporate body, one person and two witnesses. Such an easy question. The answer is, Parmeshwar is saying 31C. The answer is A. Only one person is required. Okay, so OPCs, one-person companies, are designed for single entrepreneurs, requiring just one person who is both a shareholder and a director. तो इसका आंसर C नहीं है. ठीक है. 31 का आंसर E भी नहीं है. Only one person is required, जो एक shareholder भी है और वो director भी है. ठीक है जी. Okay. Chalo. Which of the following is not covered under priority sector lending? MSME loans up to PSL cap, agricultural lending, affordable housing loans, loans up to 100 crore to the startups. What's the answer? 32. D is absolutely correct. Loans up to 100 crore to startups is not covered under PSL. MSME loans up to PSL cap ये तो होगा ही. Agriculture is also under PSL. Affordable housing भी है. Loans up to 100 crore to startups नहीं, ये नहीं. ठीक है जी. So 33 question. What does CGTMSE stand for? Very easy question, direct question. ऐसा भी question आ रहा है तो 3 के marks है ना. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Entrepreneurs, Credit Guarantee Fund for Technology Startups and MSMEs, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, Collateral Guarantee Framework for MSME Enterprises, Credit Grant Scheme for MSME Entrepreneurs. 33 का क्या आंसर है? Very easy question. 33, Parmeshwara is saying C. Anybody else would like to answer? Preeti, what's the answer? Absolutely correct. C is the correct answer. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. ठीक है? What is the updated guarantee coverage under CGTMSE for loans to micro enterprises? Updated guarantee coverage क्या है under CGTMSE? 50%, 60%, 75%, 85% or 90%? B is not the correct answer. 60% नहीं है. Guarantee coverage updated 85% है. So loans up to 5 lakh to micro enterprises are covered up to 85%, enhancing small entrepreneurs' access to institutional finance. So 85%. Preeti, you are absolutely correct. Parmeshwara, I hope this is clear. 60% नहीं है, 85%. ठीक है? In case of default on a loan of 5 lakh or less under CGTMSE, what percentage of the loss is covered? अगर default हो गया on loan of 5 lakh,
under CGT MSE? 60%, 70%, 75%, 80% or 85%? What is the answer? 35th question. What is the answer? प्रीति, not 34th, 35th question. तो आप कह रहे हैं 85%, ई कह रहे हैं आप। परमेश्वरा, आप बताइए what is the answer? The answer is E, 85%. So CGT MSE covers up to 85% of losses for such loans, enabling banks to lend with reduced risk. ठीक है? Who were the initial contributors to the CGT MSE corpus? Today only in the class we've done this. है ना? CGT MSE से जो related questions है ये हमने ये आज की क्लास में किया था कवर। CGT MSE क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, है ना, ये सब हमने किया था आज ही क्लास में पेड बैचेस में। So RBI and NABARD initial contributors, Ministry of Finance and SEBI है initial contributors, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी है, नीति आयोग एंड सिडबी और सेबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Who were the initial contributors? 36th question का क्या आंसर है? परमेश्वरा is saying C. Anybody else? Preeti, what about you? C है इसका आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी. Jointly, the scheme was jointly funded by Government of India and SIDBI to promote collateral-free loans to the micro small enterprises, right? Under CGT MSE, what is the general provisioning norm for banks on defaulted loans? 0%, 15%, 25%, 75% और 100%? बताइए. What is the answer? Thirty-seventh question. C है correct answer, B नहीं है. Not D, not B. परमेश्वरा, प्रीति, 25%. जनरल प्रोविजनिंग नॉर्म क्या है बैंक्स के लिए? 25%. कि बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोविजन एटलीस्ट 25% on the uncovered portion of the defaulted loan as per CGT MSE norms. Right? All right. चलो. Which document is not considered a valid proof of business existence for sole proprietorships when opening a current account? Income tax return, Udyam certificate, GST certificate, Shop Act registration, utility bill. क्या नहीं है? What is the answer for this question? So पूछा which is not considered as a valid proof. 38B, 38E, इसका आंसर है E, यूटिलिटी बिल. एब्सोल्युटली करेक्ट. किसने दिया? प्रीति गिव मी E as the answer. B नहीं है, E है. RBI KYC norms do not accept utility bills as proof of business. They may be used only as a supplementary address proof. What is the primary purpose of banks conducting due diligence under KYC norms? Detect forgery, assess credit risk, prevent customer grievances, compute tax liabilities, or minimize costs. What is the answer? What is the answer? 39th question. Parmeshwar has given me B as the answer. Preeti, what about you? And does anyone else want to also answer? A है इसका correct answer, not B. A is the correct answer to detect forgery. So due diligence ensures banks evaluate the background and intent of customers to manage credit and fraud risks effectively. ठीक है? How does RBI define a shell bank under its KYC guidelines? Forex only bank, bank with no physical presence in any jurisdiction, cooperative bank without deposit insurance, bank run through shell companies, bank operating purely online. What's the answer? Question number 40.
B is absolutely the correct answer. B with bank with no physical presence in any jurisdiction is considered as a shell bank. ठीक है? According to RBI's KYC guidelines, who qualifies as a beneficial owner in a company? Nominee appointed by the firm, authorized signatory of the bank account, individual holding 10% or more of ownership or control, company's promoter, chartered accountant of the entity. What is the answer? 41st question, what is the answer? C is absolutely correct. Individual holding 10% or more ownership of ownership or control. ठीक है? What does the interest coverage ratio indicate? What does an interest coverage ratio indicate? Ratio of current assets to current liabilities, net profit margin percentage, ratio of EBIT to interest expense, gross profit to total assets, or debt to equity ratio. 42nd question, what is the answer? Interest coverage ratio we're talking about. C is absolutely the correct answer. The ICR, interest coverage ratio, assesses how well a company can meet its interest obligations from the operating profits. And how do you calculate it? EBIT, which is earnings before interest and taxes. EBIT divided by interest expense. तो इसका रेशियो है. ठीक है जी? ICR. Okay. Which financial ratio best measures a company's short-term liquidity? Short-term liquidity कौन सा financial ratio measure करता है? Debt to equity ratio, return on equity, interest coverage ratio, quick ratio या फिर inventory turnover ratio. Quick ratio को हम acid test ratio भी बोलते हैं. What is the answer? Which financial ratio measures company's short-term liquidity? 43rd question. Preeti is saying D. Parmeshwar is also saying D. Absolutely correct. Quick ratio या फिर acid test ratio है ना? It assesses a company's ability to pay current liabilities using its most liquid assets, excluding the inventories. A value above 1 is generally considered healthy. ठीक है? A company has current assets of 6 lakh and current liabilities of 3 lakh. What is the current ratio? What is the current ratio? If your assets are 6 lakh and your liabilities are 3 lakh, then what is the current ratio? 0.5, 1, 1.5, 2 or 2.5? Very easy question. 44, Parmeshwara says D. Preeti says D, absolutely correct. 2 is the correct answer. So assets upon liabilities is the correct answer. Current ratio कैसे calculate करते हैं? Current assets upon current liabilities. ठीक है? As per the turnover method, what percentage of projected annual sales is allowed as maximum permissible bank finance? कितना percentage of projected annual sales allowed है as maximum permissible bank finance? 10%, 15%, 20, 25 or 30%. 45th question क्या है आंसर? D is not the correct answer, Parmeshwara. 20% है, 25% नहीं है. तो जो turnover method है, which was suggested by the Nayak committee. कौन सी committee? Nayak committee. Allows working capital loans equal to 20% of estimated annual sales for small businesses with funding requirements up to 5 crore. ठीक है जी? So 45 का C, Preeti, C is absolutely the correct answer, है ना? ठीक है. If a business has monthly inflows of 10 lakh, outflow of 12 lakh, यानी कि inflow हो गया आपका 10 lakh and outflow हो गया आपका 12 lakh. So what is the working capital gap using the cash budget method? यहाँ पे आपको specially mention किया है cash budget method के through आपका जो
वर्किंग कैपिटल गैप है कितना है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख और 5 लाख. परमेश्वरा से 46 सी 47th क्वेश्चन है ये. अच्छा ओके ये नंबरिंग मिस्टेक हो गया, ये गो अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स है ना. ठीक है इस नंबर के अकॉर्डिंग जाओ आप. 46 क्वेश्चन ये थोड़ा मिसमैच हो गया. ठीक है सो आंसर इज सी एब्सोल्युटली करेक्ट. परमेश्वरा प्रीति सी है करेक्ट आंसर 2 लाख. यानी कि इस माइंड कैश बजट मेथड के अकॉर्डिंगली जो वर्किंग कैपिटल जो आपका गैप है दैट इज आउटफ्लोज माइनस इनफ्लोज. कितना है यहाँ पे 2 लाख. वेरी सिंपल वेरी इजी है ना. What is the upper limit of loan eligibility under the turnover method recommended by the IRAC committee? Loan eligibility क्या है? Under the upper limit क्या है of loan eligibility under turnover method? 2 crore, 3 crore, 4 crore, 5 crore or 6 crore. What is the answer? (48) B 5 crores absolutely the correct answer. So जो turnover method है it is applicable for businesses needing working capital up to 5 crore. It simplifies appraisal by linking finance to 20% of projected turnover. है ना. ठीक है जी. A नहीं है D है correct answer. Okay प्रीति. चलो how is working capital finance determined under the turnover method? 10% of annual turnover, 15% of annual turnover, 20% of annual turnover, 25% या 30%. 49th question. What is the answer? Working capital finance determined under the turnover method. 49 C you're saying 20% of annual turnover. What about you Parmeshwara? C is absolutely the correct answer. 20% of annual turnover. So banks provide working capital equal to 20% of the projected annual turnover under the turnover method recommended by an IRAC committee. ठीक है. A company has monthly purchases of 20 lakh and a lead time of 2 months. तो lead time कितना है 2 months का and जो monthly purchase है वो कितना है 20 lakh. So what should be the amount sanctioned under inland letter of credit? तो inland letter of credit LC कितना amount sanction होना चाहिए 10 lakh 20 30 40 और 50. What is the answer? Again easy question. 50th question का क्या आंसर है? इजी क्वेश्चन है बस ये टर्म्स पता होनी चाहिए. अगर ये टर्म्स नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना आंसर करना. लेकिन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं लीड टाइम क्या है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका बहुत इजी हो जाएगा इसे कैलकुलेट करना. बहुत इजी है. नथिंग यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 20 लाख इनटू 2 मंथ्स. ठीक है तो जो आपकी एलसी लिमिट होती है लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट इट इज इक्वल टू मंथली परचेजेस multiplied by the lead time. So 20 lakh into 2 to 40 lakh इसका आंसर है. 50 का आंसर डी है. प्रीति डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. ठीक है. An LC limit of 48 lakh has been approved with a lead time of 3 months. तो आपकी LC लिमिट क्या है 48 लाख और आपका लीड टाइम क्या है 3 months. प्रोजेक्टेड एनुअल परचेज क्या है? What is the projected annual purchase? 144 lakh, 180 lakh, 192 lakh, 200 lakh, 216 lakh. 51A कहा है which is not the correct answer. The answer is C 192 lakh. तो जो आपका एनुअल परचेज है उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल परचेज जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय 12 डिवाइडेड बाय जो लीड टाइम इन मंथ्स है आपका. ठीक है तो आपकी एलसी लिमिट यहाँ पे क्या है 48 लाख और इंटू 12 अपॉन आपका लीड टाइम क्या है 3 months. तो 3 4 12 4 8 32 4 16
192 आपका आंसर है। ठीक है, तो ए नहीं है 51 का आंसर, इसका आंसर क्या है, सी है 192 लाख। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। एनुअल परचेज क्या है, एलसी लिमिट इनटू 12 अपॉन लीड टाइम। ठीक है, ओके परमेश्वरा, प्रीति, आई होप दिस इज क्लियर कि आपका गलत हो गया, आपने ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, a firm has annual raw material purchases worth 240 lakh and a lead time of 2 months. तो आपका जो raw material का purchase है वो कितना है, 240 lakh, lead time है आपका 2 months. How many letter of credit are required annually? कितना letter of credit annually required है, 4, 6, 12, 24 या फिर 2? What is the answer? What is the answer? रॉ मटेरियल परचेज कितना है, 240, लीड टाइम कितना है, 2 मंथ्स, तो क्या है इसका आंसर? हाउ डू यू कैलकुलेट इट? आपने जैसे यहाँ पे क्या कहा है, द फर्म हैज एनुअल रॉ मटेरियल परचेज ऑफ 240 लाख, लीड टाइम कितना है, 2 मंथ्स। इसमें आपका जो ईच एलसी कवर्स 2 मंथ्स ऑफ परचेजेस, तो ईच लेटर ऑफ क्रेडिट कवर्स 2 मंथ्स ऑफ परचेजेस। तो एक साल में, एनुअल की बात की है ना, एनुअल की, तो आपके 12 मंथ्स में कितना हुआ, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 240 लाख जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12/2 which is 6। ठीक है, ओके, 52 का आपने ए कहा था और प्रीति ने बी कहा था, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रीति एब्सोल्युटली करेक्ट। परमेश्वर, आई होप इट इज क्लियर कैसे करना है। ठीक है, which type of letter of credit allows advance payment to the exporter before shipment? Green clause LC, red clause LC, irrevocable LC, revolving LC, confirmed LC. क्या है इसका आंसर? 53rd question. Parmeshwara has given me the answer as C, which is not correct. Which is not correct. Irrevocable LC नहीं है, red clause LC है इसका आंसर। Red clause LC permits the beneficiary to receive advance funds to procure goods before shipment, aiding in production and procurement. तो red clause LC है, not irrevocable LC. All right. प्रीति ए भी नहीं है, ग्रीन क्लॉज भी नहीं है। ठीक है, which of the following is not a direct party to a letter of credit? Applicant, beneficiary, issuing bank, advising bank, or insurance company? What is the answer? 54th question का क्या आंसर है? Parmeshwara is saying E. Preeti, what about you? What about others who are attending the class? आंसर है इसका ई, इंश्योरेंस कंपनी। तो जो मेन पार्टीज है एलसी में, एप्लीकेंट है जो बायर है, इशुइंग बैंक है, बेनिफिशियरी है जो सेलर है, ठीक है, और एडवाइजिंग कंफर्मिंग बैंक। ठीक है, एज पर IRAC नॉर्म्स, what is the minimum provisioning required for a doubtful asset outstanding for more than 1 year? 10%, 20, 25, 40 or 100%. Minimum provisioning for a doubtful asset outstanding for more than 1 year. तो कितना provisioning आपने रखना है इस केस में? 55th question का क्या आंसर है? परमेश्वर is saying E 100%, 55 E कह रहे हैं आप। The correct answer is D, not E. 100% नहीं है, 40% है। ठीक है, so for a doubtful asset for over 1 year, 40% provisioning is required on the secured portion and 100% on the unsecured portion. Secured unsecured का मतलब collateral. अगर तो collateral है तो 40% provisioning, collateral नहीं है तो 100% provisioning. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन करना चाहिए था whether they are asking about unsecured या फिर secured, तो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्लिच है। ठीक है, ये एडिशन होना चाहिए था कि वो सिक्योर्ड की बात कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड की बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, हाँ, ड्रॉप हो जाए फिर ऐसा क्वेश्चन।
Under RBI's IRAC norms, if an ad hoc credit limit is not reviewed or renewed within how many days, it becomes an NPA. यहाँ पे हम नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल जो लोन्स हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एड हॉक क्रेडिट लिमिट यानी कि जो टेम्पररी बेसिस पे आप अपनी जो आपको क्रेडिट लिमिट दी है उसके बियॉन्ड अगर आप क्रेडिट लेते हैं फॉर इमरजेंसी शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर टेम्पररी पीरियड, उस क्रेडिट लिमिट की बात कर रहे हैं कि अगर ये रिन्यू नहीं की विद इन हाउ मेनी डेज, उसके बाद ये एनपीए बन जाती है. 90 days, 120 days, 150 days, 180 days और 365 days. परमेश्वरा इज सेइंग ए. तभी मैंने यहाँ पे ना स्पेसिफाई किया कि हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लोन्स हैं आपके, स्टैंडर्ड लोन्स में देखो आपका जो एनपीए है वो 90 डेज के ड्यू के बाद एनपीए बन जाता है. लेकिन जो आपके एड हॉक क्रेडिट लिमिट है ना, जो आपकी एड हॉक क्रेडिट लिमिट है वो 90, उनके लिए 90 डेज का टाइम लिमिट नहीं है, 180 डेज का टाइम लिमिट है. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. प्रीति, डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ए नहीं है. आई होप परमेश्वरा दिस इज क्लियर टू यू. तो स्टैंडर्ड लोन्स के लिए कितना है, 90 डेज, और जो एड हॉक क्रेडिट लिमिट है यानी कि टेम्पररी जो हम क्रेडिट लिमिट लेते हैं उसके लिए 180 डेज है. ठीक है परमेश्वरा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, चलो. A loan account with repayment delay between 31 to 60 days falls under which SMA category? SMA 0, 1, 2, substandard or NPA? बताओ. A loan account with repayment delay between 31 to 60 days, वो किसकी कौन सी कैटेगरी में आता है? SMA 1, 2, 0, substandard और NPA? What is the answer? 57th question. The answer is B, SMA 1. तो SMA 0 है 1 to 30 days, SMA 2 है 31 to 60 days, SMA 2 है 61 to 90 days और beyond 90 days इसको हमने क्या बोल दिया, NPA. ठीक है जी. तो SMA 0 हो गया 1 to 30 days तक अगर नहीं आया, 31 to 60 days तक नहीं आया तो SMA 1, 61 to 90 days तक नहीं आया तो SMA 2, और उसके बाद फिर 90 days के बाद, 90 days के बाद क्या बन गया वो, NPA. ठीक है. सो 57 का आंसर आपका है बी, एब्सोल्युटली करेक्ट है. परमेश्वरा, प्रीति, what is the provisioning requirement for a standard asset loan given to an MSME? provisioning requirement क्या है एक standard asset loan के लिए? 0.25%, 0.40%, 1%, 2% या फिर no provision? क्या आंसर है इसका? 58th question, परमेश्वरा ने दिया है A. प्रीति, what about you? The answer is A, 0.25%, which is absolutely correct. ठीक है. Yes, प्रीति, परमेश्वरा, absolutely correct. An asset is considered unsecured and treated as a loss asset if the realizable value of the security is below what percentage of the total exposure? 5%, 8%, 10%, 15% or 20%? What's the answer? 58 A, 59. Preeti is saying C. C is absolutely the correct answer. So if the realizable value of secured assets is less than 10% of the total exposure, the asset is treated as unsecured and it requires full provisioning. Right? Which of the following bank financed exposures is not classified as NPA even if other facilities of the same borrower are NPAs? Term loan, overdraft, cash credit, bills discounted against accepted LC, working capital demand loan. What is the correct answer? Not classified as NPA even if other facilities of the same borrower are NPAs. 60,
डी कह रहे हैं आप, which is absolutely correct. Bills discounted against accepted LC. A bill discounted or purchased with recourse is classified as an NPA if it remains overdue for more than 30 days, 60 days, 90 days, 120 days or 180 days. Bill discounted or purchased with recourse. 61 का क्या आंसर रहेगा? Preeti saying E, 180 days. Parmeshwara is saying C, 90 days, and C is absolutely the correct answer. 90 days ही है, यहाँ पे 90 days ही है. ठीक है प्रीति? According to RBI IRAC norms, bills purchased or discounted becomes NPAs if payment is delayed beyond 90 days. ठीक है, not 180 days. As per RBI's updated microfinance regulations of 2022, a microfinance loan is defined as a collateral-free loan provided to a household with annual income up to 1.5 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh और 10 lakh. क्या है इसका आंसर? Collateral free. A microfinance loan is defined as a collateral free loan provided to a household with annual income. कितनी annual income? 62. Preeti says A. Anybody else? C is the correct answer, not A. 3 lakh है इसका answer. RBI defines microfinance loans as unsecured loans given to households with annual income not exceeding 3 lakh across all lender categories. ठीक है? What is the primary purpose of conducting due diligence under KYC norms? To detect forged documents, to assess credit risk, to reduce customer grievances, to calculate applicable taxes, to cut down banking costs. Okay, Parmeshwara. वैसे only a few questions are left. So, if you want, you can attend it. 10-15 questions are only left. 63A. Okay, to detect forged documents. ये तो हमने पहले भी किया था, right? चलो. Who qualifies as a beneficial owner under RBI's KYC guidelines? Who qualifies as beneficial owner? Nominee of the company, authorized bank account operator, individual holding 10% capital or control, promoter of the company or chartered accountant. 64 का क्या है आंसर आपका? C है, individual holding 10% capital or control को हम beneficial owner कहते हैं. Absolutely correct. What is the standard range of CIBIL scores used to assess individual credit worthiness in India? 0 to 1000, 200 to 900, 300 to 900, 500 to 1000. What's the answer? $65. C, you are saying absolutely correct. 300 to 900 CIBIL score. What is the maximum composite loan amount banks can sanction to MSEs under a single window facility? 10 lakh, 25, 50, 1 crore or 2 crore? What is the answer? Maximum composite loan amount that banks can sanction to MSEs under a single window facility. 66th question. D is the correct answer, not E. 1 crore है, 2 crore नहीं है. So banks can extend up to 1 crore as a composite loan covering both working capital and term loan needs for MSEs under RBI single window approval. Under the Mudra scheme, loans of up to 50,000 fall under which category? Tarun, Kishore, Shishu, Pragati or Micro Start. Very easy. Very easy. बहुत easy question है. मुद्रा स्कीम के अंडर loans of up to how many rupees fall under which category? 50,000. शिशु, absolutely correct. C is the correct answer. तो आपकी 3 categories होते हैं वैसे, शिशु, किशोर, तरुण और अब एक और कैटेगरी है तरुण प्लस. तो अप टू अगर 50,000 है तो शिशु, 50,000 टू 5 लाख है तो किशोर, 5 to 10 lakh है तो तरुण एंड तरुण प्लस 10 to 20 lakh मैक्सिमम है ना. ठीक है जी.
What is the upper limit for loan coverage under the credit guarantee fund for micro units? CGFMU में upper limit क्या है loan coverage की? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख. क्या है 68th क्वेश्चन का आंसर? बी बताया आपने. डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी. 10 लाख नहीं है, 20 लाख है. सो CGFMU provides guarantee cover on loans up to 20 lakh, ensuring small borrowers get unsecured funding under Mudra. Under CGFMU, what portion of the amount in default beyond the initial 3% borne by the lender is covered by the fund? 50%, 60, 75, 80 or 90%? 69th question का क्या आंसर होगा? What portion of the amount in default is covered by the fund? The answer is 75%. ठीक है, 75%. So after the lender absorbs the first 3% of the loss, CGFMU covers 75% of the remaining default amount, boosting the lender confidence. ठीक है, okay. The Receivables Exchange of India Limited is a joint venture between RBI and BSE, Bombay Stock Exchange, SIDBI and National Stock Exchange, NABARD and SEBI, NSE and MSME Ministry, या फिर SIDBI and RBI. क्या आंसर है इसका? RXL, Receivables Exchange of India Limited. It is a joint venture between whom? नहीं भी आता तो guess. 70 you're saying B, and that is absolutely correct answer. SIDBI and National Stock Exchange. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. ठीक है. What is the maximum eligible project cost for new manufacturing units under PMEGP to avail margin money subsidy? 25 lakh, 40 lakh, 50 lakh, 75 lakh or 1 crore? What is the answer? Maximum eligible project cost क्या है for new manufacturing units under PMEGP? C is absolutely the correct answer. 50 lakh manufacturing projects with a cost of up to 50 lakh are eligible for margin money subsidy. Under PMEGP, what is the maximum eligible project cost for existing units seeking a second loan? 50 lakh, 75 lakh, 80 lakh, 1 crore, 1.5 crore. 72D, 1 crore. Very, very good. 1 crore is the correct answer. What is the margin money subsidy rate under PMEGP for general category applicants in rural areas? 15%, 20, 25, 30 or 35%? 73rd question. Margin money subsidy rate क्या है under PMEGP general category applicants के लिए in rural areas? C, very good. 25% is correct answer. General category rural applicants receive 25% margin money subsidy under the PMEGP scheme. ठीक है, 25%. 25% है, 35% नहीं है. ठीक है, प्रीति. Under PM Vishwakarma, what is the total maximum loan amount an artisan can avail? 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh और 10 lakh. कितना maximum loan amount? PM Vishwakarma में total maximum loan amount. Very good. 3 lakh is the maximum loan amount. तो दो tranches में provide होता है loan. 1 lakh initially and 2 lakh after meeting training and repayment conditions. है ना? ठीक है जी? Correct. What is the amount and repayment period for the second tranche of loan under PM Vishwakarma? Only 4-5 questions are left, तो फटाफट से cover करते हैं. What is the amount and repayment period for the second tranche of loan under PM Vishwakarma? 1 lakh 18 months, 2 lakh 24 months, 1 lakh 30 months, 2 lakh 30 months or 3 lakh 36 months? 75th question. B कह रहे हैं आप and D is the correct answer, not B. तो 2 lakh 24 months नहीं है,
2,30,000 months है करेक्ट आंसर प्रीति. आई होप दिस इज क्लियर. After completing the first loan and training, artisans can avail up to 2 lakh with a 30-month repayment period. तो 2 लाख तो है, ये तो हमें पता ही है. 30 months का repayment period. What interest rate is charged under the PM Vishwakarma scheme? कौन सा interest rate charged है? What interest rate? 4%, 5%, 60%, 77, 4%, 5%, 6%, 7% और 8%. बी है करेक्ट आंसर, नॉट सी प्रीति. 5% है, नॉट 6%. ठीक है जी. इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज है? 5% विद गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन. Under the MSE CDB scheme, what is the central government subsidy for common facility centers with project cost between 5 to 10 crore? 40%, 50%, 60%, 70% और 80%. ये जो आपकी MSE CDB स्कीम है, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी है फॉर CFCs कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट बिटवीन 5 to 10 crore, इसमें व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी? 77 आप ई कह रहे हैं. डी है करेक्ट आंसर. 70% is the correct answer. So MSE CDP provides up to 70% subsidy for common facility centers in clusters to boost MSME competitiveness. Okay. Under MSE CDP, what is the maximum percentage of the project cost allowed for land acquisition in CFC projects? कितना percentage, maximum percentage of project cost? 10%, 15, 20, 25 or 30%. 78th question. Maximum percentage of project cost which is allowed for land acquisition. Land acquisition के लिए in CFC projects. D is the correct answer. यहाँ पे 25%, 20% नहीं है, 25% है. ठीक है. Land cost can constitute up to 25% of the total project cost under this MSE CDP for CFCs. ठीक है. आपने बस ये वाला पोर्शन रिवाइज करना है, बाकी तो आपका काफी सही है प्रीति, है ना. आपको काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस वर करेक्ट. तो ये थोड़ा सा एंड वाले जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी गड़बड़ की आपने, बाकी तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर्ड है ना. A firm with investment up to 25 crore and turnover up to 100 crore qualifies under which PSL category? Medium enterprise, loan to micro enterprise, loan to small enterprise, government backed MSME loan, stand up India scheme. 25 crore investment है और 100 crore turnover है. अभी हमने देखा था 2.5, 125, 125, 10, 100, 500, ये लिमिट्स देखी थी ना हमने. स्मॉल सॉरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की. ये आपकी इन्वेस्टमेंट, ये आपकी टर्नओवर है ना. तो क्या है 79th का आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट, लोन टू स्मॉल एंटरप्राइज, है ना. ठीक है जी. लास्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड फॉर टुडे. An Indian citizen staying in India for less than how many days in a financial year is classified as a non-resident Indian? तो NRI किसको बोलेंगे? अगर वो इतने से कम दिन रहेगा in a financial year. 120 days, 182 days, 183 days, 240 days. बड़ा easy question है ये तो, आपको आना चाहिए है, बहुत बेसिक जनरल नॉलेज है ना. NRI किसको बोलेंगे अगर वो कितने दिन से कम रुकेगा? 182 days is absolutely the correct answer. Very, very good. That is all. ये थे आपके सारे के सारे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे. जो हमारा बर्थडे बैच सेल है वो दैट इज बैक. ये हमने पहले भी बीच में कुछ दिनों के लिए लॉन्च किया था. जो सेल है ये 60% ऑफ है ये, और ऑल इन वन रेगुलेटरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन के लिए. ये 6 अगस्त को एंड करेगी. तो आप जिस भी एग्जाम, मान लीजिए आप 5-6 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए आपकी ये ऑल इन वन रेगुलेटरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन रहेगी. आरबीआई हो गया, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, किसी के भी लिए बस आपको कोड यूज करना है बी डे आपने कोड यूज करना है एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स. ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम,
तो मन्नत एजुकेटर मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, thank you so much. If there's any doubt that you want to ask, you can ask me. Otherwise, we are going to end the session over here. यही मैंने आपके साथ करना था। जो आपके काफी क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि आपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है, किस टाइप के आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कीजिए। तो वेलकम प्रीति। ठीक है, सो दैट्स इट, लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।